Welcome back to Darshan channel. Today we are going to solve the question paper of truth functional logic. So this is the recent question paper 2024 का question paper है BA program का. So it was of 3 hours duration and maximum marks अभी आपका 90 out of 90 marks होगा. So the question is in both Hindi and English. So let's start with the first question. Attempt any three. So इसमें से there are 4 questions given. So इसमें से आपको 3 questions solve करना है. And it is out of 18 marks. So जो theory question है उसका I've already made videos, so I'll share the link in the description box. So let's start with second question. Say I'll start with the second question. बाकी सबका I'll give the link in the description below. So first is attempt any to define P trie bar Q into negation and disjunction. So in this particular question, इसको we have to define it into negation and disjunction. Disjunction is wedge. So ये आपका interdefinability का questions है. So let's try to solve this question. If the question is P trie bar Q, so इसमें you have to use the equivalence, material equivalence का formula. So it can be written as P dot Q and then wedge negation P dot negation Q. So this is the formula. So इसका दो formula is one is in horseshoe and one is in dot. तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, but as in the question it's mentioned wedge में करना है, disjunction में करना है, so we'll take this particular formula. Again P dot Q का, so again it would be negation. So negation P wedge negation Q. And then again wedge तो आपके पास पहले से same thing will be followed here. बाहर negation होगा, negation negation P dot negation negation Q, and this is your answer. So again if you want to remove the double negation you can, otherwise ये भी आपका correct है. So यहाँ पे if you see यहाँ पे De Morgan लगा है, so it's P dot Q negation is equivalent to negation P which negation Q, and then यहाँ पे जो negation है that is being replaced here. So ये आपका first question. Now moving to the next question, we have P horseshoe Q and then wedge negation R. Now in this particular question it's mentioned negation and conjunction. Conjunction meaning dot में आपको change करना है और negation में change करना है. So that for that we'll use the formula P wedge Q is equivalent to negation P dot negation Q. So again यहाँ पे we're using the De Morgan formula only. So let's take this whole as P and this as Q. So again it is negation, बाहर negation of P. So negation of this whole P horseshoe Q. उसके बाद आपके पास आ जाता है dot negation Q. So we already have negation R. So it will be negation R. Now again same लिख लीजिए negation and then P horseshoe Q. So again P horseshoe Q के लिए formula is P horseshoe Q is negation P dot negation Q. So this is the formula. So इसमें direct you can use the formula. So एक negation आ जाएगा and then P dot negation Q dot negation R. So this is the final. So you can again remove the double negation here और अब as it is भी छोड़ सकते हो, वो दोनों correct है. Now moving to the third question. In third question what you have to do is you have to define this term into negation and conjunction. Negation and conjunction. So the solution would be P wedge Q wedge R. So what you can use here is again you can assume this as P and this as Q, and you can use the formula negation of P dot negation of Q wedge R. So again we are using the De Morgan formula here, and उसके बाद we already have dot, यहाँ पे आपको change करना. So it will be negation of P dot and then negation Q के साथ negation dot negation R. So ये आपका solution हो जाएगा. चलिए this is the solution. Now let's move to the next part. Next question आपका B part is again very simple. So in this part what you have to do is you simply have to assign the values. So you simply have to assign the values here.
So assign the values in a sense that a b ka value is given as true statement and x y z are false statements. So you have to assign the values and solve it. So let's solve the second question B. So the values are already given, A, B, C are true and X, Y, Z are false statements, and we have to determine which of the following are true statements. So we can attempt any three questions. So let's try with the first question. So आपका given है A horseshoe, B horseshoe, Z. So again just simply assign the values. T horseshoe T, because A, B are true. Horseshoe Z का value is false, so simply assign the value. Now यहाँ पे you have to know that T horseshoe में आपका क्या आता है. T is again T, horseshoe false, then again TF is F. So इसके लिए what you have to remember is, in case of dot P dot Q में if both the conjuncts are true then it is true. बाकी कितने भी आपके वो है वो आपके false हो जाएंगे. Let's suppose false true will be false, true false will be also false, false is false. So again you have to remember only this part. T will be T in a sense that both the conjuncts are true then it is true. P wedge Q में दोनों अगर false है disjunct तो आपके false आते हैं, और P horseshoe Q में if it's true and if antecedent is true consequent is false, it is false. So if you T and F है तो आपका आंसर F आ जाता है. Similarly बाकी questions भी कर सकते हैं. Let's try to solve the last question. So Y का value is false, horseshoe B का value is true, and then again Y का value is false or bracket, and then Y का value is again false. So let's say if true false true will be again true, horseshoe false आपका आ रहा है, and then bracket के बाहर you have false again. So again true false is false, horseshoe false, false is true. So again false is true false is false, बाकी it's true. So again you have to remember these three conditions. And then now let's move on to the next question number 3. Symbolize the following, attempt any three. So we can attempt any three. Let's start with the first question. So Turkmenistan and Russia both do not raise the price of oil. So इसका आंसर हो जाएगा negation T dot negation R. So Iran and Iraq. So again Iran के लिए we're taking, Iraq के लिए we've taken I, Jordan के लिए J, and either or है. So आपका wedge आ जाएगा. Ramesh can pass the examination only if में again horseshoe use होगा. रमेश के लिए R, वर्क हार्ड के लिए W, लेट्स सपोज ये आपका आ जाएगा. ही इज अ फिलोसोफर एंड अगेन फिलोसोफर के लिए P, साइंटिस्ट के लिए S. ठीक है. सो दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज डिटरमाइन द वैलिडिटी इनवैलिडिटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स. नाउ अगेन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स बाय ट्रुथ टेबल मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. So आपका जो questions given है that those are capital, right? So if you see the questions here, so I've written, okay, put the questions here. So P horseshoe Q which R Q, therefore negate P horseshoe R. So यहाँ पे भी capital P होना चाहिए था, P horseshoe R. So again if this is the question, first you have to change it into argument form. So again argument form हमेशा आपका small letters में consider करते हैं, right? So you need to know the difference between argument and argument forms as well. So argument forms में convert करना is important. So यहाँ पे and यहाँ पे argument forms में आपको करना होगा. So P का value, so again for making the table it should be 2 raised to the power n, and यहाँ पे we have 1, 2 and 3 variables, that is 2 raised to power 3, that is 8. So 8 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? So again you'll write T पहली बार and then F, right? So again the division is being made. अगर आप इसका half कर देते हो तो 4 आ जाता है, right? 4 and 4 का half would be 2. So इस way में you can just remember the thing. So P, Q and R. So again it should be in this sequence. आप पहले Q, R फिर P नहीं लिख सकते. It should be in the sequence P, Q and R. Now यहाँ पे आपका premise 1 का है P horseshoe Q wedge R, premise 2 का आपका Q है, on conclusion आपका P horseshoe negation R is given here. So again simply assign the values. पहले you will solve this part. Q and R. T का values T, F का value is again T, F is T, again this is T. Now F
एफ इज हमेशा आपका एफ, दोनों अगर एफ है डिजन तभी आपका एफ, फिर टी, फिर अगेन एफ, फिर टी, अगेन आपका एफ. सो ये आपने सॉल्व कर दिया. सो यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ पी. सो टी है एंड देन यू हैव टू टेक दिस वैल्यू. नाउ एफ, so again simply you have to take this one as p and you already have the value of p and then q by 4 का वैल्यू आपको मिल गया. So let's suppose आपके पास false है and then यहाँ पे t है, that is t t t. So again simply have to assign the values. And then next conclusion का p and r. So we don't have negation of r, so I've just written negation r का value. negation मतलब उसका opposite हो जाएगा, t है तो false, false है तो true. So you just write it down and then you can find the final value over here. So we have the premise 1 here, premise 2 क्योंकि q है, and the premise 3 is p horseshoe negation of r. So that is the conclusion part. So now what you have to remember is if the premise 1 is true, premise 2 is also true, and if the conclusion is false, then in that case it is invalid. So it's C, जो आपका first है यहाँ पे, if you'll see the premise 1 is true, premise 2 is also true, and if you'll see the conclusion it is false. So you have to highlight this area. ठीक है, you just simply have to highlight this area. बाकी तो कोई condition नहीं है. So in the above given argument form, because it's mentioned it should be in argument form, is invalid. And then why is it invalid? Because in the first row if you'll see that the premises are true and the conclusion is false. So you have to write this line as well. And then next question आपका given है p horseshoe q horseshoe r, p horseshoe q and p horseshoe r. So again जैसे हमने किया था 2 raised to the power 3, that is 8, वैसे ही आपको solve करना है. And then you can just check the solution, and at the end you have to mention that the above given argument is valid. So in this condition, let's suppose this is your premise 1 and this is your premise 2 and this is the conclusion. Now this is true, true and true. False wala condition you don't have to check. So again true, false. So again you don't have to check. True, false, no, t t t. Again t t is t, t t is t t, right? So again there is no condition where the premises दोनों आपके true और conclusion आपके false है. So again in that case it is valid. ये चीज़ ध्यान में रखना है. And let's move to the next question. Determine the logical status. So again यहाँ पे logical status का क्या meaning है? Logical status meaning whether the given statement is tautology, it is self-contradictory, जिसमें true or false होता है, that is contingent. So that is what logical status means here. So आप simply लिखोगे p का वैल्यू, q का वैल्यू and r का वैल्यू, and then जो आपका स्टेटमेंट गिवन है. सो दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट. सो ये आपका स्टेटमेंट टोटल गिवन है, एंड जो आपका मेन ऑपरेटर पे वैल्यू आता है, लेट्स से यहाँ पे आपका, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल दिया, ट्रू और फॉल्स भी है, सो दैट इज कंटिंजेंट. सो इफ यू सी दिस कंडीशन, इसमें सब ट्रू आता है, दैट इज टोटोलॉजी. So what you have to do is simply write p q r का value, and then now यहाँ पे p horseshoe q का value. So t t is t, t t is t, t f is f, f, and then t t t t, right? And then similarly you already have the value of I. So यहाँ पे be mindful that जैसे आप इसका value लेते हो उसके बाद इसका value, r का value. So it should be t t t, very good, t f is f. लेकिन अगर आप r पहले ले लेते तो एफ टी वुड बी टी. सो इसीलिए p horseshoe q का वैल्यू पहले लेना है, फॉलोड बाय r. फॉल्स, 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 ट्रू, अगेन ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स. सो अगेन यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस है, तो ये मिस्टेक आप मत करना. एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू फिर सी ट्रू फॉल्स दोनों है तो कंटेंजेंट. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग कंटेंजेंट यू कैन मेंशन दिस लाइन दैट द लॉजिकल स्टेटस ऑफ अबव स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी या कंटेंजेंट या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे आपका पूरा फॉल्स होता, फॉल्स, 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 तो ये आपका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता. सो नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द वैलिडिटी इनवैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग by using reductio ad absurdum. So again in this question reductio ad absurdum meaning that you have to use the shorter truth table method. ठीक है, so shorter truth table method में so ये आपका पूरा premise 1 हो गया, and then your premise 2 and then the conclusion. So एक step है कि you just take the premises as true and conclusion as false. So यहाँ पे आपने premises का जो फाइन वैल्यू है उसको true ले लिया, conclusion को false ले लिया, and then उसके बाद you simply have to assign the values. जैसे यहाँ पे false, false आ गया,
यहाँ ट्रू आ गया. So if q का वैल्यू इज फॉल्स, यू असाइन द q का वैल्यू, s का वैल्यू इज फॉल्स, यू असाइन द वैल्यू. उसके बाद डॉट में ट्रू विल बी ओनली इन वन कंडीशन, जब दोनों आपके नंबर्स ट्रू हो. सो दिस कैन बी ट्रू ओनली इफ r इज फॉल्स एंड p इज फॉल्स. तो अगेन p फॉल्स होगा तो negation p would be true and tt is true. So just write the statements also assuming the argument form invalid. So we are already assuming it as invalid because it is true, true, false, premises true and conclusion false. There is no discrepancy. So again there is no discrepancy or inconsistency here while assigning the truth value of the proposition variable. Therefore the assumption is wrong. So not wrong ये वाला हटा देते. Therefore the assumption is correct and the argument form is invalid. So ये wrong हटा दीजिएगा, ठीक है. So it should be invalid. Now next question उसमें भी आपको similar method से लिखना होगा, but I've just mentioned valid and invalid. So let's say this question p horseshoe q negation q dot r or negation of p. So again p horseshoe q. So again this is in the form, right? So ये आप change कर देना p horseshoe small q negation of q dot r and therefore negation of p. So again this is something which you can do. So इसके बाद what you have done, premises को आपने t ले लिया and conclusion को false. So conclusion में we just have negation p. तो negation p का value false होगा तो p का value आपके पास t आ जाएगा. And then उसके बाद if you'll see p का value अगर t है, so we've just taken q का value is also t because false नहीं ले सकते. false लेते तो ये आपका false हो जाता है इसीलिए. So q का value is true, so negation q का value is false. So again एक भी अगर false होता है that means आपका false हो जाएगा. So r का value true हो या false हो तब भी आपका value हमेशा false ही होगा. So again there is inconsistency here. So ये आपका valid हो जाएगा. And then the second method. So this is the first method. So again you can use either दोनों में से कोई सा भी method. So second method में क्या करना है, premise 1 dot premise 2 horseshoe conclusion. What you have to do is that यहाँ पे फिर आपका premises true लेना है, conclusion false, और horseshoe के नीचे false आ जाएगा because true false is false. उसके बाद tt is again t only in one condition. negation q का value is t तो q का value would be false. r का value is 3 तो r का तो ऐसे यूज नहीं है. negation p का value is false, that means t का value is true. So again t false is again false, but यहाँ पे हमने t लिया है so that it means invalid क्योंकि error या inconsistency आ रहा है. So similarly जो आपका next question है, so next question में again p horseshoe q dot q horseshoe r horseshoe negation of p horseshoe q. So ये आपने false ले लिया है, this is true and this one is false. Again false एक ही condition में है when it is true and false. negation p का value is true, that means p का value is false, r का value is false. So again if it is false, ये दोनों तो true होना चाहिए. डॉट के केस में दोनों कंडीशंस true होते हैं. So again you have to take this one as q का value as false because true लोगे तो ये आपका false हो जाएगा. So there is no error as such, so it is invalid. So you simply have to write the above line assuming the argument form as invalid. ये पूरा लिखना होगा. चलिए now let's move on to the next question is formal proof of validity. So formal proof of validity में you have to use the 19 rules. So first question आपका given है यहाँ तक. So उसमें मैंने q में wedge p ले लिया. So addition आपका कर दिया. Addition के बाद and then you do commutation. p का place change कर दिया and once you are done with the commutation फिर आपके पास q wedge p है, q wedge p. So you can simply use modus bonus और आपको वहाँ से r मिल जाएगा. So next question number 2 is quite lengthy. तो question number 2 देख लेते हैं. So यहाँ तक आपका है. So उसके बाद what you have done is third में equivocation. So again यहाँ पे material equivalence लगाया. Sorry, material equivalence p dot q of h negation p dot negation q. You have to use this step. So last में I've written very छोटा सा implication. So यहाँ पे इसके बाद negation d which g के बाद what you have to do is d horseshoe g by using implication in number 15 में you have to use implication and उसके बाद आपका आंसर आ जाता. So it's quite lengthy, तो आप एक बार try करिए अपने से भी and then try to use the solution and you can easily solve the question. Next question is not that lengthy, काफ़ी easily solve हो जाता है.
सो फर्स्ट यू हैव टू यूज डी मॉर्गन के बाद डबल नेगेशन के बाद इफ यू सी 4 में इम्प्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेशन था, सो नेगेशन सी हॉर्शू ए, एंड देन फिर अगेन डबल नेगेशन, एंड देन एट द एंड you use hypothetical syllogism. 6 you have here, and then फर्स्ट में hypothetical because A दोनों में कॉमन है, so it will be C horseshoe negation B. So this is easy. Question number second थोड़ा सा लेंगे है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर सकते हो आप. Now question number fourth is the last question. So question number fourth में भी again addition करना. So negation T है तो negation which negation U आप ऐड कर सकते हो, and once you add this so you can use De Morgan here. De Morgan के बाद फर्स्ट और फिफ्थ में modus tollens. फर्स्ट आपका ये है, and then नंबर फिफ्थ is T dot U. तो इन दोनों में modus tollens. So इसीलिए modus tollens होके R which S I, इसीलिए we have used negation U here, addition of negation U. उसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट वन है 6 में फिर से डी मॉर्गन आप लगा सकते हो, डी मॉर्गन नेगेशन आर और नेगेशन एस, एंड देन सिंप्लीफिकेशन के बाद आर नेगेशन आर वी ऑलरेडी हैव, नेगेशन आर आपके पास आ गया तो ये आपका आ जाएगा वी हॉर्शू नेगेशन वी, एंड देन बाय यूजिंग इम्प्लीकेशन एंड लास्ट में टोटोलॉजी लगा के. सो यहाँ पे इंटेंशन वॉज टू फाइंड नेगेशन वी, एंड नेगेशन वी आपको पता है कि यहाँ से मिल सकता है क्योंकि वी यहीं पे है, बट फॉर दैट नेगेशन आर चाहिए था, एंड देन आर यहाँ पे था. सो उस वे में यू हैव टू थिंक थ्रू कि कंक्लूजन क्या फाइंड करना है, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव टू ट्रांसलेट द लॉजिकल नोशंस. सो यहाँ पे फर्स्ट इज ऑल यू नो, ऑल मतलब आपका होता है ए प्रपोजिशन, राइट, एंड ए प्रपोजिशन के लिए सिंपली राइट एक्स, माउंटेनियस के लिए mx, and then horseshoe and x. It's already given. Only के लिए भी again you know a preposition हो जाता है, so again x and then px horseshoe cx. So again this तो I've repeated several times कि ये जो आपका subject and predicate का place है वो आपका change हो जाता है. So again that is one thing. And next आपका है the common con is never in a sense that that will be e preposition. So आपका आ जाएगा x and then cx horseshoe negation of fx. And last आपका है not always, meaning o preposition आपका है doctors are not always rich, meaning some doctors are not rich. So यहाँ पे आपका आ जाएगा ex and then doctors के लिए dx dot negation of rx. So next question है discuss the additional rules of inference of quantification theory. So यहाँ पे what you have to discuss is what is universal instantation, existential instantation, universal generalization and existential generalization. These are the 4 additional rules which you have to explain here. And उसके साथ साथ there was another question which is given x fx horseshoe gx, ex fx dot gx and then ex gx dot fx. So ये एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है. सो I've already mentioned in several videos, इसको मैंने एक डिटेल में कवर कर रखा है, so you can watch that video as well. यहाँ पे fx dot gx है, so इसको आपने a से रिप्लेस करके सॉल्व किया by using existential instantation and then universal, एंड उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, मॉडस पोनेंस, कॉम्पिटिशन, सिंप्लीफिकेशन, मॉडस टॉलरेंस, कन्जम्पशन, एंड लास्ट में ईजी लगा. ईजी इन द सेंस दैट एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन एंड यू हैव द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन इंस्टेंटेशन आपको पहले यूज़ करना है, ठीक है. सो यू हैव टू यूज़ दिस पहले. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कांस्टेंट वेरिएबल्स. सो इसके लिए भी आई हैव कवर्ड इन डिटेल द वीडियो, तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा. कंस्ट्रक्ट फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. सो अगेन फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. सो अगेन EI, that is existential instantation पहले, followed by universal instantation, and